कार्यक्रम की शुरुआत पुरुष शुभ श्लोक के श्रवण से करेंगे। पुरुष से हम कोई लिंग अर्थात स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द की अभिव्यक्ति नहीं करते हैं। वास्तव में पुरुष हमारे अंदर का ईश्वरीय तत्व है जो हमें हमेशा अच्छे कर्मों और उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करता है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि सर्वप्रथम हम इस श्लोक का श्रवण करें। नमस्कार। नमस्कार। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयपुरुषः पादोऽस्येहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत शासनानशने अभि तस्माद्विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासिदाज्यम् ग्रीष्म इद्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तः समिधः कृताः देवा यज्ञं तन्वानः अबध्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षण् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये
तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संवृतं पृषदाज्यं पशुगस्तागश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये कस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जग्निरे छन्दागंसि जग्निरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावो हजग्निरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यददुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावूरुपादावुच्येते ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीष्णोऽध्यो समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशस्त्रोत्रात् तथा लोकागमकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहारा शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्चतस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अभ्यासम्भूतः पृथिव्यैरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधत् रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम् मरीचिनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मये ऋचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन्
यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यः अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनीषाण अमुं मनीषाण सर्वं मनीषाण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Of us, but thank you really, thanks for being here. मैं यहाँ बैठे सोच रहा था कि सुयोग है, अच्छा सुयोग है कि हम इन दोनों साथियों का, दोस्तों का स्वागत कर रहे हैं आज के दिन 2 अक्टूबर के दिन। और सच में अगर 20वीं सदी के या पिछले 500,000 सालों के विचारों को भी सोचा जाए तो महात्मा गांधी की गिनती कम से कम टॉप के 5-10 विचारकों में होगी, if not the best or the top most, certainly one of the top 5 or 10 human thinkers for not only the 20th century but possibly the last 500 years. ये हम लोगों का सौभाग्य है कि गांधी जी का जन्म भारतवर्ष में हुआ है। सबका जितने ये दुर्भाग्य था कि गांधी जी का जन्म और जीवन काल मोटे तौर पे ब्रिटिश हुक्मरानों के दौर गुजरा, लेकिन ये सौभाग्य भी माना जा सकता है क्योंकि मुझे विश्वास है कि उनकी विचार शक्ति को जो बल मिला, जो दिशा मिली, वो इससे मिली कि हमारे देश की वो हालत थी जो उस वक्त थी। अगर वो हालत ना होती तो शायद गांधी जी के विचार उतने पनपते नहीं जितने पनप पाए। जो हजारों लाखों बहुत अच्छे विचार गांधी जी ने कहे, उसमें से बातें हैं dignity of labor, be the change that part of the change that you want to see in the society, and the value of education as a liberating force. वो विद्या जो आपके मन को और खुला करे सब कुछ इतना करके। तो मैं यहाँ बैठे भी सोच रहा था कि नीलिमा जी और उमेश जैसे दोस्तों की बदौलत आलोक और Manga's family is able to do and demonstrate is one small example in the large country and the world to implement what Gandhi ji said. मैं इसीलिए सब कह रहा हूँ कि मैंने गांधी जी को कभी पॉलिटिकल लीडर के तौर पे खास नहीं देखा या माना। मेरे लिए गांधी जी का व्यक्तित्व, उनका जीवन और काल और उनका जो विचार है वो that's always been more of a social thinker and a spiritual leader. And मुझे विश्वास है कि
जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द प्रयोग किया है दिव्यांगजन, कुछ व्यक्तियों को, कुछ समूहों को उसे समस्या है, लेकिन मैं भी सोच रहा था बैठे कि अगर गांधी जी आज होते तो जरूर इसको पूरी तरह सपोर्ट करते। हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में वो विचार कि जो व्यक्ति कुछ खासियतों में अलग है बाकी व्यक्तियों से, जिसकी खास कुछ ऐसी एटीट्यूड्स और एबिलिटीज हैं जो हमसे अलग है, उनको दिव्यांग मानना, न सिर्फ कहना, मुझे लगता है बहुत बड़ा विचार है। और मुझे अंत में ये विचार आता है पूरी विनम्रता के साथ, माफ करना, कि कुछ तो होगा गुजरात की मिट्टी में कि गांधी जी और वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे क्षेत्र के बारे में ऐसी सोच रखते हैं। धन्यवाद। वेलकम वन मोर टाइम। थैंक यू सर, आपके इस वचनों के लिए और गांधी जी और मोदी जी को याद दिलाने के लिए फिर से गुजरात की मिट्टी से बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ आई इनवाइट डॉक्टर आलोक कुमार मोहन फॉर टॉकिंग अबाउट पुरुषार्थ। ये तो टफ काम है। No, it is tough to talk about the Purusha. I wrote it because मैंने देखा कि ये टॉपिक since many years, I think last 2-3 years, we were talking about the Purusha. Yes. Yeah. We always talk about the Purusha, and I'll start with the first thing, which the chanting was there, the Puruṣārtha-प. So whenever we chant any Vedic mantras or any geet or anything, so it gives us the kind of visuddhi, means the purity, and once you do some Vedic part or something, so it says, okay, it goes directly to the God, it touches you. So that is what the first thing we had, the Puruṣārtha-प. And this sukta has 16 mantras. And when we are praying to any god or when we are calling to the god, so we do the षोडशोपचार. षोडशोपचार means the calling the god, giving the respect in 16 ways, offering the 16 things. So this mantra has a very great meaning. The Puruṣārtha has the very great meaning. And this is the गांधी जयंती के अवसर पर मैं यही कहूँगा कि सर ने आज कहा, और हम लोग आज पुरुषार्थ का जश्न मना रहे हैं, चाहे वो गांधी जी का पुरुषार्थ हो, चाहे हम सभी का पुरुषार्थ हो, चाहे नीलिमा जी का पुरुषार्थ हो, चाहे गुप्ता सर का पुरुषार्थ हो, चाहे अगर हम यहाँ पर देखें तो शाश्वती मैडम है एज ए पेरेंट, उनका पुरुषार्थ हो, हम सभी का पुरुषार्थ है, और हम अपनी पुरुषार्थ के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए हम जश्न मना रहे हैं. So this is why what we did, for that we are celebrating. So are we happy whatever we have done in our life or not? We are satisfied with that or not? So the mostly whenever we talk about the पुरुषार्थ, सबसे पहले हमें खुद को जोड़ के देखना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही हो रहा है. So I once again welcome you ma'am, Nilima ma'am and Umesh sir. It is always pleasure कि आप जब भी आते हैं यहाँ पर तो हम सभी की जो खुशियाँ हैं वो बढ़ जाती है, सबसे पहली बात. दूसरी बात, एक जो वाइब्रेशन है लाइफ में वो आता है, और लास्ट 2 ईयर से जैसे मैम आई नहीं थी, 2-3 साल हो गए, दिस इज द 3rd year, and we were so much of missing about it कि okay ma'am is not coming. We had a lot of programs during the COVID. I think we were so much of busy, more than I think 100 and 200 कितने episodes हुए होंगे. Yeah, it was good for us, but we were always missing क्योंकि this year Nilima ma'am has not came. Okay, so that was we were missing, and और जो आज हम लोग इस मंत्र की जो मंत्र से जो शुरू किए हैं, ये
वैदिक मंत्र है और इस सुख में हमने जैसे कहा कि शुद्धि तो है, हमारी श्रद्धा है, हमारी भक्ति है कि हम, और हमारी पवित्रता है और हमारा वातावरण भी पवित्र होता है। और हमने कहा कि 16 इस मंत्र में 16 देयर आर 16 श्लोकास और 16 श्लोक का मतलब होता है कि हम 16 उपचार से पूजा कर रहे हैं, 16 तरीके से पूजा कर रहे हैं। एंड दैट इज द फर्स्ट इज आवाहन, so the inviting, the second is giving the asana, giving the place to sit, and third is the path, पैर को धोना, और उसके बाद अर्घ, भाई आप आए हैं तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए, और आचमनी कराना। सो आप आए तो थोड़ा सा, पहले के जमाने में तो कोविड ने सिखाया कि हाथ और कुल्ला करना चाहिए पहले के जमाने में तो पूरा आचमनी होता था कि कोई बाहर से आता था तो वो पूरा हाथ मुंह धोते थे। एंड देन स्नान, और फिर मधु पर, जो मधु खिलाया जाता है वो वीर्य के समान है। मधु का जो जीवन में उपयोग है वो बहुत ही बड़ा उपयोग है, तो मधु पर भी भगवान को दिया जाता था। देन तिलक, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, द पान, एंड नारियल। So these are the 16 things we offer to the God while we call. So with that feeling, I offer you welcome। हम आप सभी का, जितने भी लोग हैं, हम आप सभी का ये 16 उपचार की तरह से हम आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। और इसी तरह दिल से मैं देसाई सर का हमेशा, मेरे लिए कोई शब्द नहीं होता है और सर हमेशा एक छोटे भाई की तरह गाइड करते हैं और पूरी तरह से वो रहता है। तो सर आज मौका मिला है वो 16 चीज तो है नहीं, लेकिन उस 16 उपचार के साथ आपका भी स्वागत है और आप सभी का स्वागत है। और गांधी जी ने एक जो मैं पूरे इस जब पुरुषार्थ के बारे में मेरे दिमाग में चर्चा आई और देन यू सेड यू आर कमिंग ऑन द 2nd अक्टूबर, आई थॉट इट इज अ गांधी जयंती और बच्चे होंगे नहीं, बच्चे को बुला नहीं सकते बिकॉज़ दिस इज नेशनल हॉलीडे। So in that way we can't have the full-fledged kind of things. Then we'll say okay, we'll do this small programs and in the Gandhi Ji's note, so Gandhi जी ने कहा था अपने पुरुषार्थ से ही स्वराज की प्राप्ति होगी। If you do your own efforts, then you can get any the freedom or independence. तो हम, हमारा देश आई थिंक उनके इस थॉट से आजाद हुआ। हम सभी ने कुर्बानी दी है, सिर्फ गांधी जी ने नहीं दी, हम सभी ने कुर्बानी दी है, हम सभी के कुछ न कुछ एफर्ट्स हैं। तो हम कलेक्टिवली उस एफर्ट्स को जरूर एक्नॉलेज करें कि हमारे जो एफर्ट्स है वो कितना अच्छा है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई भी हो, कुछ ना कुछ हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे इकरा हो। आज हम लोग बात कर रहे थे लीना प्रोजेक्ट के बारे में कि कुछ ना कुछ हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है इस पूरी सोसाइटी को और पूरे समाज को, तो उससे हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। और I think we were in the last time we were sitting somewhere and I was there with देसाई सर, और उस समय किसी ने कहा कि 97 में मनोविकास की स्थापना हुई थी और देसाई सर ने कहा कि 25 साल हो गए। So do you remember sir? हम लोग काम में इतने व्यस्त थे कि हमें ये भी नहीं पता चला we have crossed 25 years of our services. So let us start from the today and आज 25 साल की जो यात्रा का जो वर्ष है हम उसको प्रारंभ करें और 25 साल की तरह उसको मनाएं। और पिछले 25 साल में what I felt, all the members, all the parents, all the students, all the donors, सभी ने अपने अपने संकल्प से मनोविकास को आगे बढ़ाया कि जैसे क्योंकि I do this, okay, I will work for this। और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी कहा क्योंकि I will show you my ability। So this is their संकल्प। तो उस संकल्प से आज हम देखें तो सिर्फ मनोविकास इस बिल्डिंग बनी नहीं है। मनोविकास की जो सोच थी, जो मनोविकास की कल्पना थी, जो मनोविकास के इम्पैक्ट थे वो बहुत जगह पहुंचे हैं और देश भर में जितने भी दिव्यांगजन है सब उसको मदद मिली है मनोविकास के कार्यक्रम से। और विशेष रूप से आई कैन टेल यू हियर होमोफोब की जो कंट्रीब्यूशन रहा है और खास तौर से नीलिमा मैम का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, आपने सिर्फ वित्तीय सहायता, यू हैव नॉट गिवन ओनली द फाइनेंशियल सपोर्ट, यू हैव गिवन द मोरल सपोर्ट एंड आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल एवरी वीक वी टॉक और उसमें बहुत सारी बातें होती है
और उससे जो एक बल मिलता है, उससे जो एक एनर्जी मिलती है, उसको हम अगर हम कहें कि वी आर नॉट हैविंग द ओनली द रिलेशनशिप ऑफ द डोनर और डोनी, वी हैव द रिलेशनशिप ऑफ द वेरी द इटर्नल रिलेशनशिप, उसको उसी को हम आत्मीय संबंध कहते हैं कि हमारा आत्मा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम देखें कि आज जो भी सपोर्ट होमोफोब से मिला है, वह सपोर्ट क्या हुआ है कि हमारी एक अस्तित्व बनी है, we have got our some stake in the sector, we have got some identity in the sector, and even we have created many resources for the country. और अगर हम पुरुषार्थ शब्द के बारे में बात करें, आज हम सभी अगर कहें कि अपने अपने पुरुषार्थ के लिए खुशी मना रहे हैं, सबने जो कंट्रीब्यूट किया है उसके लिए हम अगर हम उसको सेलिब्रेट करें तो वैसे अभी जैसे हमने पुरुष सूक्त देखा, और अगर भारत सनातन धर्म, और अगर हम कहते हैं कि जो सबसे पुरानी एक किताब है, ग्रंथ है, वो वेद है, अगर हम उसको माने तो पुरुष शब्द जो है वेद में, हर वेद में कितनी बार आया है, आई वाज थिंकिंग टू काउंट इट, but I was not able to count it because it was repeated many times, and the purush shabd is just to have the eternal efforts, the eternal attachment with anyone. It is that denotes the attachment, that denotes कि आप कितना आत्मीय रूप से, कितना मन से किसी चीज से आप जुड़े हुए। पुरुष शब्द यहाँ पर ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, यहाँ पर ना ही कोई महिला को बताता है ना ही कोई पुरुष को बताता है। तो हम हमेशा जब इस वेद में, या जब अगर हम कहें कि पुरुष शब्द में एक ऐसी चीज है कि हम हर व्यक्ति में ईश्वर की पहचान देख रहे हैं, तो हमें ये अपने जीवन में लाना चाहिए। और मैं तो खैर मुझे लगता है कि लास्ट 10 years I had got some kind of the self realization कि हम जो काम कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, and it is maybe I'm doing for some god or something like that, and we always talk about the god, we always talk about the Sai Baba, तो हो सकता है कि that has came through you only कि we think about the god in everyone, so this is the पवित्र भावना है हमारे मन में, और उस भावना को, उस श्रद्धा को अगर हम व्यक्त करते हैं, उस श्रद्धा से अगर हम काम करते हैं, तो वही पुरुषार्थ है, वही सबसे बड़ा चीज है। और अगर हम मनोविकास को एक संस्था के रूप में बताएं कि मनोविकास एक चैरिटेबल सोसाइटी है, मनोविकास इतने मेंबर्स हैं, इतने सारे हैं, we can't say like that, even I will not market it like that कि हमारे इतने बच्चे हैं, हमारे इतने बच्चे आगे बढ़ गए। हम कोई भी इसको संस्था के तरह हम कभी आज तक बोल ही नहीं पाए, क्योंकि हम हमारे मन में ये लगता है कि हम सबकी पूजा करते हैं, हम सबकी भक्ति करते हैं, तो उस भक्ति भाव में क्या किसी के बारे में बोलना या अपने बारे में क्या बोलना। सो मनोविकास एक भक्ति की तरह रही है, खास करके मेरे लिए, और मैं यही सोचता हूँ कि अगर हम धर्मपरायण काम करते हैं, कोई भी धार्मिक काम करते हैं, तो वो डायरेक्ट भगवान को जाता है। तो ये भक्ति जो है वो मेरे लिए यही है कि मेरा पुरुषार्थ, शायद मैं अपने जीवन को सुधार रहा हूँ, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं अपने ये इसलिए कर रहा हूँ, शायद मुझे सुधरना हो तो मैं इसलिए इस काम को कर रहा हूँ। और अभी जैसे पुरुष में ही मैंने पहला जो शब्द है, पहला जो मंत्र है, the first chanting which we had here, so it was like God की एक असीम कृपा का वर्णन किया गया कि भगवान इतने बड़े हैं, इतना उनका भौतिक चेतना, उनका जो प्राण शक्ति है, उनकी जो प्रकृति है, वो इतना विस्तृत है कि जिसको हम सोच नहीं सकते, और वह विस्तृत शक्ति हमारे अंदर भी है। हम अगर हम देखें कि ईश्वर की ही असीम कृपा है कि हम लोग आज पुरुषार्थ की खुशी मना रहे हैं, और इसका अनुभव मेरे जीवन में भी है, मैं भी खुश हूँ। और मैं अगर यही कहूँ कि आप आए और हम लोग आज पुरुषार्थ सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद कि हमारे मन में कम से कम इस बात की भावना तो हुई कि हम उसका कुछ काम करें, उसके लिए कुछ बात करें। और मैं अगर जो मनोविकास की असीम भावना है उसके बारे में बात करूं, वी हैव हियर मिस्टर कमल जी, ही इज माय क्लासमेट, रूममेट, एंड if you remember Kamal ji, that was also a Sunday. One Sunday we thought to clean the basement of my landlord to start Manovikas, and
today is also Sunday. And Kamalji said, oh, there is a lot of money we can raise, a lot of funds we can raise because a lot of commodities was there. And हम लोग जब start किए काम तो we were able to clean only 20 yard basement. बहुत ही तब छोटा सा हम लोगों ने जगह साफ किया और हमें कोई उससे फंड भी रेज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ. हम लोगों ने सिर्फ कबाड़ को उठा के एक उसी पर रखते गए, स्टक करते गए. तो अगर हम देखें कि पुरुषार्थ तो वहां कमल जी की भी थी कि कमल जी ने कहा कि नहीं आज ही करना है. तो और अगर हम देखें कि नीलिमा मैम जो 2000 में सन 2000 में फर्स्ट टाइम आई थी तो वी वर इन द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड आई वाज यूजिंग द हॉटमेल एंड आई मे हैव द अबाउट 20 और 50 व्हाटएवर द ईमेल आईडीज. आई थॉट क्योंकि मैं अब सबको मेल लिख देता हूं कि आई विल स्टॉप मनोविकास. एंड the first visit was done by Nilma ma'am and from that day onwards Anil Lal, yes. अगर मैं कहूं कि श्रेष्ठ पुरुष के रूप में तो मनोविकास में नीलिमा मैम और अनिल लाल का पदार्पण हुआ. अगर मैं कहूं ईश्वर के रूप में उनका पदार्पण हुआ. और आज तक कभी भी हम लोगों ने मुड़ के पीछे नहीं देखा उस दिन के बाद कि we have not thought of कि okay we should close. Even during the pandemic we had a lot of financial crisis, but we have not thought कि ठीक है बंद कर देंगे. तो आपका हमेशा चरण जो है वो एक जीवन दायिनी रूप में रहा है. और नीलिमा मैम अगर मैं कहूं कि आपके आने से ही मनोविकास का यज्ञ शुरू हुआ है, मनोविकास का कार्यक्रम शुरू हुआ है और बहुत सारे कार्यक्रम हमने कहा. और अगर हम कहते हैं कि जो अभी हमने पुरुष सुख के बारे में पढ़ा, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि पुरुष सुख में बहुत पढ़ता हूँ, उसको बहुत करीब से जानने की कोशिश करता हूँ और हर बार कुछ न कुछ नया मिलता है. क्योंकि इसमें जितनी वेद की ऋचाएं हैं, जितने ऋग्वेद हैं, सामवेद हैं, सबकी ऋचाएं जो है इसमें है. तो जो लोगों ने जो जो कहा, चाहे वो देसाई सर थे, देसाई सर हैं या विक्रम दत्त सर थे, जिसने भी कहा कि जिसके भी जो भी चिंतन आए वो मनोविकास के लिए एक वैदिक मंत्र के रूप में आया और हम लोगों ने उस मंत्र को यूज किया. जैसे कहते हैं कि मंत्र की सिद्धि होने से कुछ आपको चमत्कार मिलता है, भगवान मिल जाते हैं. तो जिस लोगों ने, चाहे मोहित जी ने भी बहुत सारा सुझाव दिए. तो आप लोग जितने भी लोग हैं, आप सभी ने अपनी प्रतिबद्धता, अपना 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 हम कहें कि एक सोच मनोविकास को दिया. और जैसे मैं सिर्फ मनोविकास के 100 या 200 या 1000 बच्चे से मैं नहीं काउंट करूंगा. इसकी प्रतिबद्धता इतनी बड़ी साबित हुई कि हर लोगों की सोच की प्रतिबद्धता कि हम लोग we were able to speak with the government for the right to education act in 2009 and then whatever we have suggested to the government, they had everything they have accepted in the right to education bill and that was the starting of मनोविकास advocacy with the government. और वहां पर हम देखें कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में आज हमारे कितने बच्चे, कितने दिव्यांग बच्चे पूरे दुनिया भर, पूरे इंडिया में स्कूल जा रहे हैं. और that was a thought process of our members. क्योंकि why not we should talk to the government, why not we should ask the government, why not we should teach the government, okay, Manovikas is doing like this and we should have the act. And we had in the 2016 we had the rights of persons with disability act. And I really thanks to Stuti Kakkad ma'am. And we were able to say, okay ma'am, that now the persons with intellectual and developmental disabilities, they can go to the higher education, they have the certificate, they can go to the job. Then they said, what you want? We said 1% reservation. She said yes, done. So that was accepted in the act. So this is the I think ये जो परम पुरुष की बात कर रहे हैं, ये जो आत्मयज्ञ की बात की जो संभावनाएं हम लोग कह रहे हैं, सिर्फ हमारे आपके जीवन से नहीं है. ये एक सबने विश्व की भलाई सोचकर और हमने कुछ करना चाहा है, हमने कुछ आगे बढ़ाना चाहा है और हमारे मन में कोई संकोच नहीं रहा, इसलिए हम लोग ये बात कर रहे हैं. और अगर हम लोग बातचीत करें कि हम लोग जब भी ये मनोविकास के कोई भी नई चीज को सोचते हैं, एंड एज टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंक कॉलेज प्रोजेक्ट, आई हैड द आइडिया क्योंकि व्हाई नॉट
it came in my mind in IGNO. I was those days we were running about the community college for the people with IDD. It was the first time in the country we had started the higher education kind of things, and it was only to the Manovikas. And that came in my mind that while I was talking to the vice chancellor, why not the people with intellectual and developmental disability? He should come to your university program. And he said yes. We are agreed to give the admission, but how they will come? What are the provisions? Then we said, okay, we will make some kind of notes and then we will present you. We presented the notes, but we don't have the funds because we have to elaborate everything. And आज हम लोग बात करते हैं थिंक कॉलेज की चर्चा जो है पूरे भारतवर्ष में है और UGC they had made the guideline, and whenever I talk to any university or any higher education colleges or anywhere, they say okay, you are from the think college and we are agreed to give the admission to the children with intellectual and developmental disability, not the other disabilities. Even they are very specific to talking. We are very much ready to give the admission to the children with disability to the college. So this is हम अगर इस परियोजना की चर्चा करें तो उस परियोजना के जो अगर आश्रयदाता हैं और ये जो धन अगर नहीं होता तो हम लोग अगर फंड्स नहीं होते तो हम लोग प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर पाते. एंड देन थैंक यू उमेश सर, आप एक परम पुरुष बनकर आए और यू हैड गिवन अस द फाइनेंशियल सपोर्ट फर्स्ट टाइम to start the Think College project, and it is as I remember कि 2000 में जब हम लोग मनोविकास शुरू किए थे 9 साल लगा था हम लोगों को स्कूल तक पहुंचने में. एंड आई थिंक इन 4 years पिछले 4 साल में हम लोग बहुत जगह तक पहुंच चुके हैं और वह दिन दूर नहीं है कि जब एक समावेशी उच्च शिक्षा की इंक्लूसिव हायर एजुकेशन के बारे में सब कॉलेज स्कूल हर कोई बात करेगा. जैसे आज स्कूल वाले बात करते हैं वो कॉलेज वाले भी बात करेंगे और वहां पर बहुत सारा चीज होगा. और जैसे हमने कहा कि यूजीसी ने अपने गाइडलाइन में whatever we had suggested for the people with IDD, they have everything they have accepted in their guideline. So this is thanks to even कि जो हम लोगों ने काम किया है, जो हमारी टीम ने जो भी चीज किया है वो बड़े अच्छे से एक्सेप्टेबल है. और कहा जाता है कि इसमें गुरु सूक्त में ही आज एक सूक्त था, आई थिंक चौथा या पांचवा, उसमें कहा गया कि जो पुरुष है, जो ईश्वर है, वो इतना विशाल है और उससे ही उसके सिर से जो है आकाश निकला हुआ है, उसके पांव से जो है पूरी पृथ्वी निकली हुई है. तो अगर हम देखें कि पुरुष का एक शरीर जो है वो इतना बड़ा बड़ा कहा जाता है, इतने बड़े बड़े विस्तृत रूप से उसको देखा जाता है. तो अगर हम मनोविकास के बारे में बात करें तो मनोविकास की भी परिकल्पना आज एक विराट पुरुष के रूप में होनी चाहिए कि क्या क्या नहीं किया हम लोगों ने. एक अगर हम भी स्टार्ट विद व्हेन द नेशनल ट्रस्ट एक्ट वाज कमिंग टू द कंट्री, वी वर द इंस्टीट्यूशन, वी वर एडवोकेटिंग विद द गवर्नमेंट कि ठीक है ऐसा कुछ केयर और गार्डियनशिप और लीगल गार्डियनशिप और सपोर्टेड डिसीजन मेकिंग के बारे में बात होनी चाहिए. It took 20 years. Now I am very much happy to share you here that in whole country the parents and everyone are aware, okay, there is a something provisions of legal guardianship for my children. Okay, that way we can do some help. Even I can quote you here in the last meeting we had Kallu, when we had the meeting in the last week in 20th, we had one meeting in the local level committee with the district collector and all, and we were giving the legal guardianship certificate to the persons with their parents and other people with disability. And it came one thing in my mind, we are just giving the certificate, but who will monitor it? Whether the person is live, whether their the rights is given, whether their properties are given to enjoy, the person is enjoying their property or not. So that very good, I can say you that collector he said, the district magistrate he said, hello, why don't you give us some proposal kind of things? This idea is good. So we will implement first in our district, and then we can talk to the government and we can make it implemented in the whole of the country. So like that, we have so many projects. We had started here and it is implemented around the
country and around the everywhere, तो हम 25 साल में यही अगर देखें कि सिर्फ लोग हमें गुप्ता जी हैं यहाँ पर, गुप्ता जी ऑलवेज से कि बिल्डिंग बड़ी होनी चाहिए, इंदिरा ऑलवेज टॉक अबाउट कि बिल्डिंग बहुत छोटा पड़ता है। यहाँ पर अगर हम even the last meeting, the 2 दिन पहले, while we were talking about this program, so we were saying okay, the hall is very the small, so we can call only 50-60 persons, 50-60 people for this program. So yes, definitely our buildings are very small, but our programs, our impact is very large. That is what I am very much happy to say कि जो भी हम लोगों ने एक संपूर्ण सृष्टि के रूप में जो भी संरचना करना चाहा, जो भी चीज, जो भी प्रोजेक्ट बनाना चाहा, वो हर जगह पहुंचा है। और 25 साल में तो हमने बहुत कुछ देखा, और पिछले 2 साल में जो हमने देखा वो काबिले तारीफ है। The last 2 years, I remember during the COVID, we were doing the strategic planning for the Manovikas for 2025 with all the staff and everywhere. So they were giving all the ideas and everything, and I had the from that ideas only I picked up one word is called the self advocacy. So talking or speaking about yourself, and today I am very much happy. The whole staff are here. They had made their project what they want to do. The parents are involved in the strategic planning. The many members are involved in the strategic planning. Thanks to Anand Maheshwari sir and other people, those who are in the background of management and all. So they had given the very good ideas in the developing strategic plan. And in coming years, we are bringing you here the self advocates. Maybe in coming years, you will not see Alok is talking to you. Maybe you will see that some persons with disability, the self-advocates is talking to you about the progress of Manovika. So that is how we have seen. And then last month, with the help of I think here in the Saswati ji and Sangeeta Malhotra madam and other teams, they made the one group of self-advocates that is called Manbhavan Mitra Mandali. And we had the meetings with them, and if you see the meetings, if you see the ideas of these persons, we have not thought of it. And they were not only thinking about the government policy and planning, they are also thinking about themselves, they are thinking about the environment, they are thinking about so many things. So there are so many dimensions yet Manovikas has to achieve. So मैं यही कहूँगा कि जो हमारे self advocates हैं वो अब And one good thing which I would like to share you, we had the meetings, we had the seminars, the national and international seminars here in Manovikas, and we had the complete sessions with the self-advocates. The resource persons were the self-advocates, and the people, the participants, they were very much big shot and they were the professionals. They were very much, surprised. We were not able to think of it. We were not thinking in that dimension. तो वो चीज एक मनोविकास परिवार के लिए अगर हम कहें कि आने वाला जो है वो बहुत ही अच्छा होगा, जो 25 साल तक अथक मेहनत प्रयास है आप सभी का, उस प्रयास में मैं यही देखना चाहूँगा कि हमारे जो सेल्फ एडवोकेट का ग्रुप निकलने वाला है वो बहुत बड़ा एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। और मैं आज बहुत ही मैंने कहा कि मैं जब भी नीलिमा मैम आती है तो खुशी तो होता ही है, लेकिन जब मैं आज पुरुषार्थ के बारे में बोल रहा था सोचना शुरू किया, क्योंकि पुरुषा we were talking a lot. Okay, then we said okay, let us talk about the पुरुषार्थ, and आप सभी का कड़ी मेहनत है, यही जो कड़ी मेहनत, कड़ा बलिदान जो आपका प्रयास है, यही पुरुषार्थ है। और आप हम यही कहेंगे कि आप के अंदर जो ईश्वर की अनुकंपा बनी रहे, परमात्मा आप सभी को इतना शक्ति देते रहे कि आप पुरुषार्थ करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और मनोविकास परिवार का यह जो एक यज्ञीय जीवन है, पहला यज्ञ तो कमल जी ने किया कि कूड़ा हटाकर, दूसरा यज्ञ जो है नीलिमा मैम ने किया, तीसरा यज्ञ कई बार स्तुति मैम ने की, हमारे बोर्ड मेंबर्स कर रहे हैं, अब जो हमारे देसाई सर यज्ञ कर रहे हैं कि किस तरह से मनोविकास को एक हमें एकेडमिक लेवल में, किस तरह से हमें रिसोर्स लेवल में आगे बढ़ाना चाहिए।
तो हर व्यक्ति का एक एक यज्ञ जो है वो सफल हो, मैं यही शुभकामनाएं, यही कामना करूंगा ईश्वर से। और थैंक यू गुप्ता सर फॉर गाइडिंग अस एंड मेंटरिंग अस। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, पुरुषार्थ की असलियत क्या होती है उसको समझाने के लिए और मनोविकास के 25 वर्षों को बहुत ही कम समय में हम सबके सामने दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब देखें कि हमारे बच्चों ने क्या क्या है। नाउ वी सी हाउ द सक्सेस स्पीड। मैं बुलाना चाहूंगी अपने बीएड के स्टूडेंट्स को कि वो आए और अपना प्रेजेंटेशन दें। Pfizer, Saida, and Neha with षऽएव। First of all, I would like to wish you a very good afternoon to all. Now I am starting the सैजल तो कश्ती है, एक तैरती कश्ती, एक तैरती कश्ती कहाँ रुकती है, अवसर दो तो हर रोज बहती है। Dr. Mosumi Bhowmik was a trained, professional and versatile educator, received guidance from her teacher, late Dr. Rita Peshwaria, an exceptionally talented clinical psychologist at the National Institute for the Empowerment of Persons with Intellectual Disabilities, Divyangjan. Dr. Mosumi Bhowmik was mentoring Sajal for education at Manovikas School for Inclusion. After the demise of Dr. Mosumi, Sajal had difficult life situation and unable to continue her education. The Suchita project supported Sajal. She passed class 8 and pursuing her secondary education. Sajal learned sexual and reproductive care for herself and joined the Make My Choice program. She is independent in traveling and managing her life well. Thank you. From ordinary to extraordinary international player, Miss June. June has been living in Udgirkir since October 2016. She finished class 8 and started showing interest in sports. June joined Suchita program in April 2022, receiving the Make My Choice self-care and sexual reproductive health care training. She is undergoing a certificate in retail store operator assistant course. She was selected for volleyball in Special Olympic and joined National Coaching Camp in July 2022 at Pondicherry. Now she participated in the first preparatory camp in September
Trust and abilities. Learning data entry at ACE Lab. Deepika is pursuing certificate course in domestic data entry operator at ACE Lab. Deepika has substantial functional limitation in learning and coping with verbal instruction. She has other related strengths in utilizing her visual information even when it became abstract or complex. She joined the Suchita project and passed the 12th class from NIOS. The Manavika's family considered her strength within the context of her visual abilities. She is learning to handle complex data and formulas with appropriate personalized support. सुचिता बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांग महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति। अमूल्य अमूल्य इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में पढ़ती है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आदेश के बाद अमूल्य उदन केयर होम में जुलाई 2006 से रह रही है। अमूल्य ने 12वीं कक्षा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से पास किया है। अब उसने उदन केयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कार्यक्रम के अंतर्गत बेसिक एमएस वर्ड, एक्सेल आदि की ट्रेनिंग भी पूरी कर ली है। अमूल्य को बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांग महिलाओं के लिए समावेशी कौशल विकास कार्यक्रम सुचिता द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। भारत की पायलट परियोजना जो बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए समावेशी उच्च शिक्षा विकल्प विकसित करने के लिए बौद्धिक है। थिंक कॉलेज के द्वारा 2021 में बीए प्रोग्राम में प्रवेश मिला है। I am Soham Dev, pursuing a bachelor degree. This year, I got admission to Bachelor of Arts at Indira Gandhi National Open University. Soham joined Manovikas School for Inclusion in 2011 and completed senior secondary from NIOS. I love dance and music. I had teachers and students as teacher aide. Soham said that Think College program is helping my study at the university. Sagar passed class 12, learning online marketing to sell his product. He joined Manavikas in the year 2013 with lots of conceptual processing difficulties and behavioral issues. He passed a certificate program in food and beverages services, steward from National Skill Development Council. The most pleasurable moment was when Sagar got a part-time job while studying in class 12 and earned 2,000 rupees as his first salary. He learned to travel independently. Due to the impact of COVID-19, he lost his job. He restarted training in handicraft making at Lavart, learning how to sell his product online at website of Lavart. काका a shining star. अगर हौसला हो बुलंद तो छू सकते हैं आसमान. Kaka and his family member had associated conditions of mental health issues and living in deprived condition. Kaka's family member approached Manolya Residential Care in the year 2017 and admitted him there. From Manolya School for Inclusion, he passed class 5th and now studying in Open Basic Education level of 6. The National Institute of Open Schooling. He won more than 25 prizes in talent shows, inter-school event, painting, dancing competition, inclusive sports. Kaka is a national level football player of Team 10. The little girl Aksha. Family and parents wished Aksha to speak and demonstrate some reading and writing works. She successfully completed Arham Child Care Center and got admission to Manovikas School
school for inclusion. During COVID-19, she actively participated in online activities such as speech, therapy, and educational guidance. From Manovikas E. Shala. Afsha said, "You know, I'm confident now. I speak and talk. I am monitor of my class." Journey of Alia with pyomyositis towards inclusion. Alia was born with a right leg infection, pyomyositis. The doctors had to amputate her leg just after birth. Pyomyositis is a rare and treatable bacterial infection that affects skeletal muscles, the muscle you use to move, the larger muscles of the legs, especially the quadriceps, thigh muscle, are most commonly affected by pyomyositis, but can occur in other muscles too. Approximately 90% of pyomyositis cases are caused by the bacterium Staphylococcus aureus, a common staph infection bacterium. Most people have Staphylococcus aureus bacteria on their skin or noses. These bacteria only cause most problems when they make their way inside your body. Alia was identified in one of the health screening camps organized by Manovikas during the relaxing period of COVID-19. Her parents enrolled her in the Aram Child Care Center A3C and started a school readiness program. A3C team has helped her to get the appropriate prosthesis, artificial leg, through Bhagwan Mahavir Viklang Sahayata Samiti. Now Alia is walking with a smile. Thank you. Smile Project, Spatial Minds in Loving Environment, Indo-American Exchange Program. 415 online joyful learning sessions by 10 volunteers from Hope Youth Chapter USA collected more than 1,25,486 smiles. Smile is one big happy family, includes 70 diverse group of children representing 20 states of India, and they speak 12 different languages. Diverse cultures and one connection of smile. Diversity is the reason for joyful learning and becoming self-advocates. Nothing about us without us. Self-advocacy group Manbhavan Mitra Mandali, the friendship circle of Manovikas, ensure the representation and direct participation of group members to decide policies and programs. Self-advocates are the resource persons in the national and international seminars and workshops. If you ask self-advocates about the purpose of their group, they will answer, "Let's speak up for sharing our feelings and desires, helping others, providing support and services. Have a great time and enjoy with everyone." And at the end of this presentation, I would add 2 lines as a staff of Smile Project. If the happiness is the wealth of life, smile is ornament on face. The purpose behind Smile Project was to create or generate smile on the face of the persons with intellectual and developmental disabilities. Yes, we did it. Smiles are generated and collected. These collected smiles get connected to each other and build a friendship circle. This friendship become a self-advocacy group by their choice. So, a single thought of generating smile leading to self-advocacy. Thank you. Thank you, HSC, for your support.
Thank you, Saira, Faiza, Neha, and of course, Sositi. अब मैं हमारे बीच ऑनलाइन माध्यम से महेश्वरी सर भी जुड़ गए हैं, तो मैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारे बहुत सारे अभिभावकगण और अतिथिगण ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं सभी का भी स्वागत करती हूँ। अब मैं आग्रह करूंगी विद्यार्थी सर को कि कृपया आए और 2 शब्द कहें। आज के इस पुरुषार्थ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलिमा सब्रवाल मैम, डॉक्टर उमेश सब्रवाल सर। आज का जो दिन 2 अक्टूबर गांधी जयंती, गांधी जी के जहन में या उनकी सोच में थी कि अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए, अंतिम व्यक्ति को कैसे सशक्त किया जाए ताकि समाज की मुख्य धारा में वो स्वयं को जोड़ सके, चल सके और आगे बढ़ सके। उस कड़ी में मनोविकास ने केवल सूचनाएं नहीं दिया, उनको समर्थ बनाया और आगे कैसे चलना है, कैसे सशक्त होना है, इसके बारे में मनोविकास ने इनपुट्स दिया, माध्यम दिया। और कहीं न कहीं जब हम रास्ता चलते हैं तो मार्गदर्शक करने वाले, बताने वाले हमारे बीच में आ जाते हैं। उसी तरीके से जब डिफरेंट 25 सालों में जो मनोविकास ने विकास किया है, वास्तव में मैम सब्रवाल और मेसर के सहयोग से जो एक नींव रखी गई, जो एक दिशा निर्देशन दिया और जो समय समय पर सपोर्ट्स मिलता रहा, और केवल जो बात कर रहे थे आलोक जी फाइनेंशियल सपोर्ट्स नहीं, लेकिन बीच बीच में इंटरेक्शन सपोर्ट्स जो मिलता रहा, उसकी वजह से मनोविकास में एक दिशा और अच्छी दिशा मिलती रही। और मनोविकास आज थिंक कॉलेज का जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और जो आलोक जी का सपना है कि एक यूनिवर्सिटी के रूप में ये विकसित हो, शायद आने वाले दिनों में होगा, ऐसा सरकार मुझे संभावना लग रही है। और इसमें सभी बोर्ड मेंबर्स और यहाँ पर जो उपस्थित है, मैं देखता हूँ कि बहुत कम जगह ऐसा मिलता है जहाँ पर इतनी ट्रांसपेरेंसी होती है और सभी बोर्ड मेंबर्स अपने तन मन धन से जैसे भी हो सकता है अपने इंटेलेक्चुअल के माध्यम से भी मनोविकास की नीति निर्धारण में उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कहाँ गैप है, कौन सी एरिया है जहाँ पर हमें सुधार की जरूरत है। और सबसे अच्छी बात है कि आलोक जी हर स्वीकार करते हैं उसको कि कहाँ कमी है, इसको कैसे चेंज करना है। ओपन माइंड, ट्रांसपेरेंसी जो मनोविकास में मुझे देखने को मिलती है, बहुत कम जगह देखने को मिलती है। और मुझे लगता है कि ये गांधी जी का एक मंत्र भी था कि जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जब तक हमें अपने आगे बढ़ने की क्षमता नहीं विकसित होती है, हम अपने आप में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। तो मनोविकास एक परिवर्तन की दिशा है, एक इनोवेशन की दिशा है जो आलोक के नेतृत्व में है। और सबसे बड़ी बात मैं अंत में करना चाहूंगा कि समागम है, एक संगम है, मनोविकास एक संगम है जहां पर सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे डोनर हो या एक्सपर्ट हो या हमारे बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, गार्जियंस, सबको चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उसको मिलाने का एक अद्भुत संगम पिछले 2-3 सालों में मैंने देखा, शायद अभूतपूर्व है। और इसके लिए मैं आलोक को डेफिनेटली बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनके इस सोच के लिए, पुरुषार्थ के लिए कि उन्होंने वास्तव में एक दिशा दिया है पूरे मनोविकास के लिए और पूरे दिल्ली भर और आसपास, और सरकारी तंत्र हो या गैर सरकारी संस्थाएं हो, सबको समागम करने में, सबको एक कन्वर्स करने में, क्योंकि केवल एक
व्यक्ति से कन्वर्जेंस से काम नहीं चल सकता है, क्योंकि मल्टीपल जो हमारे बच्चे हैं उनको मल्टीपल सेक्टर्स की जरूरत है, मल्टीपल सेक्टर सपोर्ट्स की जरूरत है, और उसको एक से कन्वर्स करने का जो काम आलोक ने किया है वो सराहनीय है। मैं आलोक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह भगवान उन्हें शक्ति देते रहे, सामर्थ्य देते रहे, ताकि हम सभी गांधी जी के जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का सपना है उसको साकार कर पाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब ऑनलाइन माध्यम से मैडम थेरेसा कुटी जी जुड़ी हुई हैं और हम सब उनको जरूर सुनना चाहेंगे, उनसे आशीर्वचन लेना चाहेंगे। कनिष्का से रिक्वेस्ट है कि मैम को अनम्यूट किया जाए। मैम, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज? कुटी मैम, मैम आप अपने आप को अनम्यूट करें। शी इज माय टीचर। कमल जी, आप कुछ बोल रहे हैं? Now I request Lalit sir first. Then Kamal ji. Please sir. थैंक यू मैडम। आज के इस पुरुषार्थ समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलिमा मैम, आप हमारे विकास में आए। मैं मानव विकास परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं मानव विकास फैमिली से 1997 से जुड़ा हुआ हूँ और आलोक जी ने जो काम किया है पिछले 25 साल में, मैं उनको बहुत ही नजदीक से जानता हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली खुद एक रिहैब प्रोफेशनल हूँ। बेसिकली मैं प्रोफेशनल थेरेपिस्ट हूँ और सर के हर जो जितने भी इन्होंने कोविड के टाइम खासकर प्रोग्राम किया है, सर कोविड के टाइम में सर का जो एजुकेशनल सोशल जो भी प्रोग्राम था वो काबिल तारीफ थी। सर ने वेबिनार सीरीज जो इन्होंने बनाया उससे मैं समझता हूँ कि जितने भी रिहैब प्रोफेशनल्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको जो इन्होंने इस सीरीज के माध्यम से ज्ञान दिया वो काबिल तारीफ है। मैं एक भारत सरकार के उपक्रम में काम करता हूँ और सर के प्रोग्राम को देख के मुझे लगता है कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इग्नू और जितने भी यूजीसी के प्रोग्राम हैं, सर के इस प्रोग्राम को उन्होंने हाईलाइट भी किया है और इनको इन्होंने भारत सरकार के हर प्रोजेक्ट के लिए काबिल तारीफ बताया कि इस तरह से मनोविकास एक सोसाइटी होके ये प्रोग्राम कर रहे हैं और सीआरई पॉइंट देके जितने भी आरसीआई प्रोफेशनल्स हैं, सर ने इस बीच में जो 2 साल बिल्कुल जिंदगी रुकी हुई थी उस जिंदगी को जो दिव्यांग जन के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए काम किया है वो काबिल तारीफ है। तो सर मैं एक मेंबर होने के नाते और आपने जो काम किया है इस बच्चों के लिए और आगे जो आपका सपना है, मैं समझता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी का जो सपना है उसमें हम लोग का जितना भी योगदान है 24 आवर्स सर मैं आपके साथ हूँ और मैं मैडम और सर से विशेष तौर से मानव विकास परिवार की ओर से आग्रह करूंगा कि आलोक सर का सपना, मनोविकास का सपना, समाज विकास का सपना के लिए आप कृपया मदद करें। ये बहुत बड़ी जो है उपलब्धि होगी। थैंक यू। मैं आग्रह करूंगी कमल सर को, इस सर आप आए। नमस्कार। आज की सभा में मैडम का और मिस्टर सब्रवाल का स्वागत करता हूँ। वास्तविकता यही है,
जितनी बातें आप लोग ने बोला और हमारे बोर्ड मेंबर हैं वो लोग बोल रहे हैं, वास्तविकता यही है। हमने जब सपना देखा था मैं और आलोक, तो ऐसे ही सपना देखा था कि एक दिन हम बहुत ऊंचाई पे जाएंगे मनोविकास को लेकर के, और धीरे धीरे आप लोगों के हेल्प से, आप लोगों के सपोर्ट से ये बढ़ रहा है और आगे और बढ़ता ही रहेगा। लोग जुड़ते जा रहे हैं, कारवां बढ़ती जा रही है और उम्मीद है कि हम लोग अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आज के दिन मैं फिर से मनोविकास की तरफ से, अपनी तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ठीक, तो अब हम अपने गुरु राजेश सर को बुलाना चाहेंगे। सर हमारे गुरु भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं और बहुत बड़े सपोर्टर भी हैं। और आज इनका बर्थडे भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके जन्मदिवस के लिए। अब इंदिरा मैम को कि 2 शब्द कहो, 2 शब्द चिरवती चिरवती और हमारी चिरवती की वाक्य है, बढ़ते चलो बढ़ते चलो। और जैसा कि मैंने जर्नी देखा तो कमल सर और आलोक सर 2 थे, लेकिन मैं शायद उसको नहीं किया कि एक और 11 थे और 11 से किसी की शुरुआत होती है। आलोक सर ने जर्नी में भी बताया कि 1-2 पड़ाव ऐसे आए जहाँ पे ये भी सोचने पे मजबूर हुआ कि बंद कर देते हैं। तो किसी महान कवि ने कहा है, लिखा है कि धरा जब जब बेकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी न किसी रूप में कोई महामानव चला आता। तो मुझे लगता है डॉक्टर निर्मा जी सर, बाद में हमारे देसाई सर और जितने भी हमारे बहुत बड़े मेंटर सर भी लोग उस मुसीबत के दौर में आ जाते हैं। कोई बात नहीं, मेरी आवाज आप तक पहुंच जाएगी भाई, आगे। तो मनोविकास एक जर्नी है और ये चलता रहेगा। और सोच जब सकारात्मक होती है, फल क्रियात्मक होता है और प्रभाव विकासात्मक होता है। ये मनोविकास से देखा गया है। जिसकी बुनियाद मजबूत हो उसकी बिल्डिंग को मल्टीप्लाई करने में टाइम नहीं लगता। तो मैंने इसकी बुनियाद में ही एक स्ट्रॉन्ग नींव डाल दी, एक स्ट्रॉन्ग ईंट जोड़ दिया जिसका नाम है इंदिरा। और एक ईंट कहीं फिर रुक जाए, उसके साथ 2 ईंट और बगल में लगा दिया जिसका नाम है रूबी और संगीता। तो सब ये 3 देवियां हमारे स्टूडेंट के रूप में भी रहे हैं और मनोविकास के बुनियाद के रूप में रहे हैं। और आपको मानना है नहीं, अभी देवी का ही दिन चल रहा है और जो मेजर देवी हमारी दुर्गा माता है उसमें भी 3 देवियों का कंट्रीब्यूशन है और यहाँ भी 3 देवियां हैं। तो समझ सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा स्पिरिचुअल पावर है। तो मैं नमन करता हूँ सभी देवियों को और खासकर इन 3 देवियों को। और कहीं ना कहीं 1-2 देवियां और भी हैं जिनसे हमारी मुलाकात अमर ज्योति में हुई थी मैडम लोगों से और वो मनोविकास फैमिली से जुड़ गई है। तो संभव ये एक वृक्ष बढ़ता जा रहा है और मैं चाहता हूँ वो इतना विशालकाय हो जाए जिसके अंदर हर पर्सन में डिसेबिलिटी गर्व से ये कह सके कि मैं दिव्यांग नहीं हूँ, मेरी आवश्यकताएं अलग है, हम भी आपके जैसे हैं, हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। समाज के निर्माण में हर कदम पे हर व्यक्ति का कहीं न कहीं से निर्माण होता है और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं वो ईश्वर के विशेष रूप से बनाए गए हैं। मैंने हम लोग जो है ना स्पेशल क्रिएशन ऑफ गॉड है। आप कहेंगे क्यों? तो सर मैं 2 मिनट और टाइम लूंगा। 20 साल का अनुभव हुआ है मेरा इस फील्ड में काम करने का। तो बड़ा सोचा कि आखिर हम लोग कर क्या रहे हैं, हमारा रोल क्या है। तो बड़ा दिमाग लगाया तो एक थॉट आई समझ में, जैसे हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिक होते हैं, ENT होते हैं, आई वाले होते हैं, स्किन वाले सारे डॉक्टर्स होते हैं जो अलग इलाज करते हैं। तो जब हम लोग ईश्वर का बिलीव करते हैं तो जब हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग चल रहा होता है भगवान के यहाँ जहाँ ब्रह्मा जी बैठे होते हैं तो वहाँ भी ENT ऑर्थो सर्जन किडनी लीवर वाले सारे एक्सपर्ट राउंड टेबल पे बैठे होते होंगे। एक बार एक प्रोडक्ट आया, चलो कोई कान लगाया, कोई नाक लगाया, कोई हाथ लगाया
और इसी बीच में चाय वाला आ गया, सर चाय लीजिए। जब तक वो चाय का कप पकड़े, कोई कान वाला से निकल गया पकड़, आंख वाला से निकल गया, हाथ वाला से निकल गया, तो वही 100 में 8-10 पीस डिफेक्टिव हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या मैंने फील किया कि रिसाइकल नहीं हो पाते, तो नीचे आ जाता है डाउनलोड करने के समय में, तो इंफॉर्मेशन आता है सर 100 में 60 डिफेक्टिव हो गया। तो वहां से एचआर टीम से कनेक्ट करते हैं, भगवान का एचआर टीम है, तो क्या करें, एचआर टीम बोला कि घबराइए मत, मैं कुछ मैनेज करता हूँ। उसने अपना सैटेलाइट वहां से ऊपर से छोड़ा, तो नीचे इंडिया में सबसे पहले कनेक्ट हुआ, और वो कनेक्ट कहां से हुआ, आरसीआई से, आरसीआई से छोड़ा। तो आरसीआई ने कहा कि चिंता मत कीजिए, हम 16 प्रकार का प्रोफेशनल तैयार कर रहे हैं आपके लिए। तो आरसीआई क्या करे, आरसीआई ने सैटेलाइट घुमा दिया, 14 लोग हैं, उसके सैटेलाइट के रेंज में हम लोग आ गए, और उस रेंज से हमारा ऐसा आई कांटेक्ट डेवलप हुआ इंटरनल स्पिरिचुअल कॉस्मिक रे, कि हम सभी स्पेशल एजुकेटेड या प्रोफेसर बनने के लिए तैयार हो गए, और हम लोग यहाँ प्रोफेसर बन गए। आज हम लोग यहाँ प्रोफेसर बन गए, तो भगवान जी कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, आपसे जो मिस्टेक हुआ उसको हम ठीक करेंगे। करते हैं कि नहीं करते हैं? जो बोल नहीं पाता है उसको अवरोधित बनाते हैं, जो चल नहीं पाता है उसको चलने बना देते हैं, जो देख नहीं पाता है उसके अंदर ऐसी दिव्य ज्योति प्रज्वलित करते हैं कि दिव्य ज्ञान के रूप में अपनी दुनिया को देखता है। जिसका लाइव एग्जाम्पल अभी लेटेस्ट आपको बताऊं, वो लड़का एक समय था जो सुसाइड करने को तैयार था, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग जाके ब्लाइंड हो गया। हमसे मुलाकात 2017 में हुई, उससे पहले बहुत ही फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में था। 2017 से मैं गाइड करता गया, और उसके मम्मी को फर्स्ट मीटिंग में कह दिया कि आप जो चाहेंगे आपका बेटा बनेगा। मम्मी रो रही थी, हमको आंसू बह रहा था, मैं रोइए मत, गुस्सा आ गया मुझे, मैं समझाने के बाद भी इमोशन ब्रश हो रहा था, बेटा ब्लाइंड हो जाए, जिंदगी में पढ़ रहा हो। मैंने कहा क्या चाहते हैं, आपका बेटा आईएएस बनना चाहते हैं, आपका बेटा आईएएस बनेगा, और कुछ चाहिए, पर चुप हो जाइए। जिसका बेटा ब्लाइंड हो जाए, नहीं पढ़ रहा हो, क्या ये सोचेगा, कुछ ही करना, आत्मनिर्भर हो जाए, किसी लाइक हो जाए। लेकिन नहीं, मेरा एफर्ट्स कंटिन्यूस गाइडेंस सपोर्ट मिला, और इस बार के यूपीएससी का रिजल्ट देखिए, वो लड़का ऑल ओवर इंडिया में 7th पोजीशन लिया है, सब्जेक्ट चयन। तो मैं सारे यहाँ प्रोफेसर से ही कहता हूँ कि हम लोग वो काम करते हैं कि भगवान से मिस्टेक हो जाती है, उनसे छूट जाती है, तो हम चिंता नहीं कीजिए, मैं हूं ना। सो मनोविकास के फैमिली में सभी लोगों का स्वागत है, 3 देवियां प्लस एडिशनल देवियां का भी स्वागत है, और चिंता मत कीजिए, यूनिवर्सिटी तो बनेगा ही। आलोक सर ने प्रॉमिस कर रखा है 500 करोड़ रुपया जल्द का यूनिवर्सिटी बनाने में, और वो 500 करोड़ कहां से लाऊंगा, उसका भी एजेंडा फिक्स है। जिस दिन राज्यसभा में लोकसभा में सदस्य बनूंगा, और तो बनूंगा अलग बात है। अब इनको यूनिवर्सिटी बनवाना है तो मुझे लोकसभा में पहुंचाना है। थैंक यू, ये जो था, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत ही जोशीला शब्द था आपका, और बहुत ही खुशनुमा हो गया। मैं अब आग्रह करूंगी डॉक्टर नीलिमा सबरवाल मैम को कि प्लीज आए और अपना आशीर्वचन दें। Hello. Yeah, let's talk in English. Yeah, you can. Like always, I come here and feel so overwhelmed and humbled. I'm beyond words. I like this Purusha. I didn't know. Alok and I have been talking about Purusha, Home of Hope, also known as HOH. It has one mission, is to empower the disadvantaged child to become self-sustaining. Under the disadvantage, we have the entire spectrum: physically crippled, mentally challenged, deaf, speech impaired, blind, name it, HOH has empowered. And I feel very proud. We are 22 years old and we have empowered close to, again, I don't want to use numbers, but thousands and thousands of children. And, but HOH is more than I wouldn't even call it an organization, it's become a movement. For me, it's a spiritual journey. And Alok is my spiritual co-traveler. So he and I, we talk about Purusha, and I don't know Vedic chants, I just feel the energy. All I know is Purusha is supreme consciousness. And consciousness is something hard to, it's
infinite potential. I mean, there's so many things written about this Purusha, this presence, this infinite potential, this intelligence, and all of us humans, we are fractals of this consciousness. All of us have that. Hello? Yeah. All of us have a part of Purusha in us. So we are fractals of this consciousness. And that's how we all are connected. We all are connected, and each one of us has our own unique potential. And I like what you said, that God is sitting up there, and yes, we all are connected, and there's a part of consciousness inside each one of us, and our journey is back to the supreme consciousness. And each one of us is unique. And yes, everybody might not start an HOH, but I cannot do HOH without all of you. So we all are connected in our own little unique roles. All in our unique roles, and each one is unique. And that's how it has been with HOH. And I feel really, really blessed to have. And I also believe, I think like attracts like. When you feel blessed to have experienced that consciousness within you, which is God, to feel God inside you, you attract God-like people. So out of that, in year 2000, when I met Alok, we were just meant to. And I also feel there are no accidents in this life. Everything is meant to be. Every moment is a match made in heaven. That's what I've told. It's all predestined. Even all of us sitting here and talking is already predestined. So we are just doing whatever we are meant to do, and very blessed to be doing what we're doing. And I just feel so blessed to have met Alok in year 2000. And it's been such an amazing journey, HOH just only started with funding a candle and making machine, because that was their future, was to make candles. And today, to see them becoming just being part of the government and making laws and changes. And we've been part of that journey, and we feel so blessed co-creating it, and completely, again, aligned with that energy and, that Purusha energy. And yeah, Alok and I are always, in Purusha, living in Purusha consciousness. And I'm just so fascinated and impressed by each one of you. And after I've come here after 2.5 years, and even COVID time, we were so connected over Zoom, but nothing like the same, connection. And thank you so much for what you're doing. And these special children are, I think, like he said, God gives them some unique powers, and their concentration and what they have done and what you guys have done, and you guys are such a source of inspiration for us. I go back so invigorated, and I share my passion and invigoration with the people there. And thank you. We all are connected, and all Purusha. We all are. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much for your kind words. Now I request Dr. Umesh Sabarwal sir. Sir, please. All of you have done such remarkable work, very humble. All the work you've done over here, taking care of people who are really in no position to be such a society, and doing so well with all your help. And I'm very impressed
project and all the assistance he's gotten from all of you. And I hope that, wish him really well, that he goes further and to greater heights. Thank you very much for inviting us, and I'm very grateful to all of you for all the things you've done over here. Really appreciate it. One thing I wanted to say. Yeah, I know you all keep saying you want a larger place, but let me tell you, after 22 years, HY doesn't even have an office. It's the trunk of my car. But look at the impact we've made. So don't worry. Spaces, yes, one day if it's meant to be Purusha, we'll give it to you. But it's all about the impact, and what you have made here is so impactful. So I just want to share that with you. We still are, but I'm still in the trunk of my car, by the way. So no office, nothing. थैंक यू मैम। यस, ये तो सही है। जगह के लिए हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, कई समय पे बहुत जरूरत होती है उसकी, लेकिन यस मैम के इन्हीं शब्दों से हम लोग रुक जाते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन काम तो बहुत बड़ा है। सो हौसला बुलंद है, जरूर होगा। और आज बहुत सारे लोगों ने अपने आशीर्वचन में ये कहा है कि हमें एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बननी है, तो जैसे ही यूनिवर्सिटी बन गई तो जगह तो अपने आप हो जाएगा। सो नाउ आई रिक्वेस्ट गुप्ता सर फॉर कंक्लूडिंग द प्रोग्राम। बिना आपके फीडबैक का तो कुछ हुई। So Adya is here as a feedback guru. He has given you the name. I think मेरे को नहीं चाहिए माइक की आवश्यकता है। Okay. Online Thank you. So I welcome Dr. Nilima and Dr. Sapravan and all the dignitaries, Lalitji, Kamalji, Dr. Saab. हम पुरुषार्थ की बात कर रहे थे, तो पुरुष अगर हम कहें तो है क्या? सबने बताया कि भाई ना स्त्री होता है, ना मेल है, ना फीमेल है। तो मैंने कहा कि भाई तन, मन, ज्ञान, बुद्धि और आत्मा, ये 5 चीजें जब संयोजित हो जाएं, एक जगह इकट्ठी हो जाएं, तो वो पुरुष बन जाता है। और इन 5 को प्राप्त करना है। हमको अपने तन को प्राप्त करना है, मन, बुद्धि को, ज्ञान को प्राप्त करना है, आत्मा को प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? उद्यम करते हैं, अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। We work for that. And what we work is nothing but our पुरुषार्थ। तो अगर हम वर्ड मीनिंग देखें, तो वर्ड मीनिंग के अंदर whatever we do, either for ourselves, for maintaining ourselves, or for the benefit of others, is nothing but पुरुषार्थ। तो ये तो बात छोटी सी हो गई पुरुषार्थ के बारे में। And हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने सोते हुए नहीं देखना चाहिए, सपने जगते हुए देखने चाहिए। कि जो सपने हम जगते हुए देखते हैं, when we are awake and we dream, they comes true। और जो नींद में हमने सपने देखे होते हैं, वो कभी पूरे नहीं होते हैं, उनको हम भूल जाते हैं, we forget them। तो आप लोग यहाँ पर बहुत मुश्किल डिसीजन है, ऐसे मनोविकास और अलोक। So I will say मनोविकास फैमिली ने जीते जागते एक सपना देखा और उस सपने पे अकेले काम करना शुरू किया। जब काम शुरू किया तो लोग मिलते गए और आज कारवां बन गया। लोग बाग इतने ज्यादा हमारे पास में आ गए और हर व्यक्ति जिसकी जितनी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार अपनी सहायता, चाहे वो टेक्निकल सपोर्ट हो, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, जिस प्रकार की भी आवश्यकता होती है, वो हमारे को करते हैं। एक बात और आई थी प्रेयर। अब प्रार्थना हम सभी करते हैं, एवरीबॉडी परफॉर्म्स प्रेयर इन देयर ओन वे, एंड प्रेयर डायरेक्टली कनेक्ट अस टू गॉड। जो भी हमारा परमात्मा है, जो भी हमारा ईश्वर है,
उसको उससे हमें सीधा कनेक्ट कर देता है और हम प्रार्थना से अपना मार्गदर्शन पाते हैं। We get the guidance from the prayer. कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ खराबियां होती हैं, कुछ चीजें होती हैं, देखा मैंने सो कोविड-19 जो है ये एक वरदान के रूप में आया हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए, क्योंकि पेरेंट्स को जब भी पता लगता है कि हमारे बच्चे में ये कमी है तो वो सीधा हैंड अप कर देते हैं, कहने कि जी इनके बारे में तो हमको कुछ नहीं आता, हम इनके लिए कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो कोविड-19 में जो टेक्नोलॉजी हमारे पास में थी और जो एक बॉक्स में रखी हुई थी उसको हमने एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने के बाद में we started using the technology and the technology helped not the children registered in the institute but much more. मेरे ख्याल से यहाँ पर ड्यूरिंग कोविड मनोविकास ने यहाँ 75 एपिसोड्स किए मशवरा, more than 75 episodes of मशवरा, and in every episode we used to have more than 300 people participating, 300 professionals participating, and what do they get? They get a certificate, nothing else. मतलब बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन होता था। अभी बात की थी कि सेल्फ एडवोकेसी। A few days back we had a very nice workshop on ECD. What does ECD mean? ECD, yeah, inclusive communication. That our communication should be such that what we talk everybody can understand. That's one. Number two, similarly ECD. Whatever documents we are preparing, whatever documents we are producing, should be accessible to everybody, easily. So in that workshop, nearly more than 225 participants were there, and we had a workshop. In that workshop, more than 100 people submitted their easily documents. They prepared in nearly 1.5 hours, and then we had the discussions. With whom? Self-awareness. They analyzed and assessed and suggested the corrections. So that's the level which has been achieved by Manovikas in providing assistance to develop these children, these kids. Because मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या अच्छा है, क्या मेरी ज़रूरतें हैं, ये मेरे से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। जब मेरे लिए ये सच्चा है, when it's true for me, what I need, I know the best, it's true for them also. And the self-advocacy promotes that they can come forward and tell you about their needs, what do they need, and how we go about it. Then तो अभी आज सुबह ना हम बात कर रहे थे, some of the staff of Manovikas was talking, कहने लगे अगर आलोक जी की इतनी सी सोच भी हमारे अंदर आ जाए ना, अगर इतनी सी भी सोच हमारे अंदर आ जाए तो हम पता नहीं क्या कर दें। तो मैंने उनसे कहा कि सोच आप जगते हुए देखा करो, You develop your own thinking. आप अपनी विचारधारा अपने लिए बनाइए। Explore yourself. आपके अंदर क्षमता है, प्रतिभा है। You have got the qualities, you have got the confidence. You can do. But explore yourself. You are not exploring yourself. You are depending on them. मैंने कहा, what you do with your children? You explore their qualities, you explore their competences, and you train them, you guide them, they perform. So you explore your qualities, competences, think over, do, and if you have got problems, you can share with, you can get support from anybody and everybody.
So lastly, it's not very long that I joined Manovikas. I think more than only 5 years back. After in 2015, I retired from RCI for the second time. First I retired at the age of 60 years in 2010 from Aliyah International Institute for the Hearing Handicap, and in 2015 I retired from RCI. And after that, I think Mr. Vikram Dattji introduced me to Manovikas, and I fell in love with it. And from then onwards, I have been a regular visitor and keep on learning from them. So, learning is an exchange. आप जो सीखते हैं ना, सिर्फ आप नहीं सीखते, दूसरा भी आपसे कुछ सीखता है, तो हमारा लर्निंग प्रोसेस जारी है. और आई विश, आलोक जी ने कहा था कि हम बिल्डिंग के लिए बात, जमीन के लिए बात करते हैं. ठीक है, जमीन जगह हमारे पास में है, मगर कभी कभी constraint of space extension को रोक देता है. We have to curtail number of programs. अगर हमारे पास में जगह होगी, अपनी बिल्डिंग होगी, we can use it our own way. Rented place, अगर मॉडिफिकेशन करना है तो हमको 3-4 लोगों से परमिशन मांगनी. क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कहाँ हम ऐसा कर सकते हैं. अपना घर है, अपनी जमीन है, जैसे हम मर्जी चाहे रह सकते हैं, जैसे मर्जी चेंज कर सकते हैं. तो मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि हमको आशीष दे, और let him send somebody who offers, who donates, who helps us in getting this land we need for this. And क्योंकि जो यूनिवर्सिटी की बात चल रही है, वो 500 करोड़ की बात करी. 500 करोड़ से पहले हमको जमीन चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स हैं. आपके पास में कम से कम 1 एकड़ या 1.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए. पहले वो 3 या 5 एकड़ हुआ करती थी, अभी उन्होंने कम कर दी है. तो 1 या 1.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए. हाँ, फैकल्टीज की बात है कि हमारे पास में 14, 15, 16 फैकल्टीज आनी चाहिए. वो हमारे पास में आराम से बन जाएंगी, क्योंकि जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, each project is a faculty, and we can add much more projects once we have got more space. So, एक बार पुनः for providing me this opportunity to share my thoughts, and I extend my heartfelt gratitude and thanks to Manovikas कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं उनका एक हिस्सा बन जाऊं और यहाँ से कुछ सीख के जाऊं, rather than giving something, क्योंकि मेरे नाम के आगे गुप्ता है, गुप्ता are never givers. देने में बहुत अच्छी चाहते हैं, and I extend my heartfelt thanks to both of you. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. Now I request आनंद ईश्वरी सर, ऑनलाइन माध्यम से आपका सहयोग चाहिए वोट ऑफ थैंक्स के लिए. इसका अनुरोध करें. आपको मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? Hello? Yeah, please sir, carry on. Okay. So सबसे पहले तो आप सबको आज गांधी जयंती, आज की 2 अक्टूबर गांधी जयंती और शास्त्री जयंती की सबको बधाई, शुभकामनाएं. और मेरी तरफ से व्यक्तिगत रूप से क्षमा प्रार्थना की चाहते, मैं आपके बीच में व्यक्तिगत रूप से फिजिकली वहां पे प्रेजेंट नहीं हूँ मनोविकास में, वेरी कंपेलिंग पर्सनल रीजंस की वजह से, जबकि बहुत इच्छा थी कि मैं स्वयं वहां पे हूँ. आज का जो कार्यक्रम रहा अद्वितीय रहा है और हर तरह से इस कार्यक्रम में दिव्यता दिखाई दी, जिसे हम बोलते हैं डिविनिटी. तो एक तो मनोविकास अब 25 वर्षीय संस्था बन चुकी है और एक पूरी पीढ़ी का साथ, जिसे कहना चाहिए एचओएच के साथ इसका रहा है करीब 22-23 साल का, जिसमें एक पूरी पीढ़ी आ जाती.
So it's a generation-long association with you, Nilima, and the entire HOH. So that is worth appreciation. और ये पूरी पीढ़ी का साथ इसका दिव्य संयोग ऐसे ही नहीं बनता है. These divine connections are no coincidence. इसके पीछे एक बहुत बड़ी सृजनशीलता और क्रियात्मकता की भावना होती है जो आज यहाँ देखने को मिली. और उसके ऊपर आज तो मैं सुनता रहा स्वप्न दृष्टा लोगों की बातें कि हम सबका एक सपना जो शायद बहुत जल्दी साकार होगा. तो इन सब को देखते हुए आज का जो ये आयोजन रहा है, इसमें चेतना, ऊर्जा और संबल, अगर मैं कहूं तो कॉन्शियसनेस, एनर्जी एंड करेज, इन तीन बातों को आज हम साथ लेके जा रहे हैं. और इसके लिए आप सबका तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं. पूरे मंच पे आसीन विभूतियों को और सामने ऑडियंस में और स्क्रीन पे जो दिखाई दे रही है पूरे भारतवर्ष से ऑडियंस, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. हम लोग मनोविकास को अब फैमिली के रूप में देखते हैं, संस्था से ज्यादा मनोविकास को एक परिवार के रूप में देखते हैं. और सबरवाल्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस फैमिली. They have proven it, even if they needed to. There's no need to prove it, but they have reinforced, that is the better word, this integration between them and us, between Homopo and Manovikas, time and again. And we are absolutely very much thankful to you, grateful to you, Umesh and Nilima, and your organization. So thank you once again for finding time to be amongst us, and we look forward to continuing the support in big, small way, including going up to the university project. So thank you everyone, and thank you the entire Manovikas family, the faculty, the students, the ecosystem partners, everyone. बहुत बहुत धन्यवाद. सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही. Host unmute कर लें please. We can't hear you. इसलिए उनको हम छोटा याद करते हैं, बड़ा याद नहीं करते हैं. महात्मा गांधी जी को बहुत बड़ा याद करते हैं क्योंकि his पुरुषार्थ, his उद्यम, his karma for the human community, human being. Thank you. सही सर, नमस्कार. हमारे टीचर्स
आचार्य एंड ट्रेनी जितने भी अतिथि गण हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि हमने एक छोटा सा लंच का प्रबंध किया है, तो आप सब लंच करके जाएंगे।